first part we had done 2.16 degrees west. DE is so much. Why? Because we are in southern hemisphere. 60 south to 53 south. The vessel is remaining in southern latitude. So damping error is going to be westerly. Remember, जब भी ये क्वेश्चन करते हैं तो बगल में आप एक छोटा सा ये कर्व बना दे सकते हैं. यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में error will be westerly and in northern hemisphere the DE will be easterly. So this was the first part, DE ka first part. Then we also calculated the SE, streaming error. Since we were doing 60 to 53 south, the course was northerly. The course was northerly, 000 degrees. On all westerly course, on northerly courses, the error is westerly. Again, the same diagram. When it is, the resultant is like this. This gyro compass shifts towards west, 90 degree to the result. And so we have another westerly error, which is 2.3 degrees if you do calculations. So since error is westerly, the gyro is supposed to be high. Gyro reading has to be west. Error west, gyro west. So from true heading, which is 000, we are adding both the westerly errors to get the gyro, which is 4.46 degrees or 004.46 degrees, because we are reading heading. It has to be read in 3 digits. For the next part, when the course is southerly, ship is sailing from 53 south to 60 south. The MLAT will remain same. So we can calculate DE for MLAT, but since the second part, in the second part, gyro compass is damped in azimuth, so DE is going to be nil. This is the second case, 53 to 60 south. Gyro is damped in azimuth, and so DE is going to be nil. These are some facts which you must note down when writing answer. What is given? Course is 180 due south. Distance done is same. Time taken is 15 hours, so the speed is going to be more. More speed means different kind of steaming error. Steaming error is also known as LCS error, which depends on the latitude, the course, and also the speed. So since the distance of 420 miles is to be done in 15 hours, the speed is going to be different, 28 knots. Mean lat is going to be 56.5 degrees, which is to be used for SE. जब 900 cos lat करेंगे तो cos lat में हम m lat लेंगे. Damped in azimuth, DE is nil. So we calculate the steaming error. .21 degrees low.
प्लीज वेरीफाई इट। कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर से अपने आप से कैलकुलेट करके देख लीजिए। Yes, sir. So 3.21 degrees low. Why? Because the Yes, sir. course is southerly. Again, if this is 900 cos lat, if the course is southerly, the resultant will be like this. And so the gyro will be settling perpendicular to this. So in turn, the error will be easterly. So we have only easterly error, streaming error, gyro error east, gyro least. That means gyro will be less than the true. True is 180 degrees. Gyro will be showing less than that. सर Streaming error कैलकुलेशन में has ऊपर to be. -28 आएगा तो उसको माइनस दिखाएंगे यहाँ पे कि नहीं? क्या चीज? कम अगेन? सर ऊपर cos 180 का और ऊपर का जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो -28 आएगा तो उसको -28 दिखाना है कि नहीं वहाँ माइनस है? वो दिखा सकते हैं क्योंकि 180 डिग्री करें cos 180 तो माइनस तो वैल्यू आएगा ही। हाँ, सो वो इसीलिए पूछ रहे थे कि वो दिखाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर कहीं वो उसमें नंबर काट ले कि माइनस साइन नहीं दिखाया तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है, जब आप यहाँ पे आएंगे और ये दिखाएंगे कि माइनस मतलब स्टेरली एरर, अगर आपने ये लिख दिया, सिंस द कोर्स इज सदरली इट हैज टू बी लो, देन उस ऊपर वाले माइनस का कोई इम्प्लीकेशन उतना नहीं है। लेकिन माय एडवाइस विल बी, इफ यू आर टेकिंग द फुल कोर्स 180 डिग्री तो माइनस के साइन यहाँ पे दिखा सकते हैं। Although तो it is not वही shown on the screen here, you can show minus, which basically translates into an easterly error. Minus मतलब easterly error, plus मतलब westerly. Are we good? Yes, sir. यस सर। Okay. So the gyro reading is going to be 176.8 degrees, which is the answer for leg 2. Think about the whole situation. When we are ready to go for the next question, please tell me. तब तक वेरीफाई कर लीजिए अपना। So next question. यस सर। Okay. Note down.
सर Yes. सर इसमें आपने इंस्टेड ऑफ पीडी अपॉन पीसी यू हैव गिवन पीसी अपॉन पीडी, मतलब तो के की वैल्यू 40 लेंगे इसमें हम फिर। PC by PD. Okay, let's see. It should be other way. PC by PD is equal to 1 by 40. That means, okay. Because usually sir k is equal to pd by pc होता है and that we take it 1 by 40. I don't know if I have made a mistake in typing, copying from the question which was there. But you're right, actually PC is equal to 40 PD. Yes, sir. PD is equal to PC by 40. Okay. So I don't know if I have made a mistake in copying down PC by PD or PD by PC. I'll verify that, but it is supposed to be saying for now, damping factor is 1 by 40. Are we good on this? Yes sir. I have to recheck whether it is given the same way, PC by PD or PD by PC in the paper. But here it is meaning to say K is equal to 1 by 40. ठीक है, so take that as a fact. और सब कुछ सामने होते हुए भी sometimes we miss, and this is one of those cases where you have made a good point. I'll have to verify from the past papers whether the mistake is there or whether I have made a mistake. Tell me when you are finished. सर इन क्वेश्चन पेपर पीसी अपॉन पीडी इक्वल्स टू 40 by 1 दे के रखा है। 40 by 1 दे रखा ना? Yes sir, 40 by 1. Okay, so that's where I made a mistake. It is actually 40 by 1. So please correct it. PC by PD is equal to 40 by 1. वो दिमाग में 1 by 40 रहता है, तो मैंने लगता है 40 by 1 by 40 लिख दिया. So mistake on my part. Typo. Thank you for verifying it. You made my job easy. I'll make a correction. Yes. Finished writing? Yes, sir. Okay. So we go on to the solution. Case 1, sailing from 58 south to 62 south. Gyro is damped in tilt, uncorrected. Now, what is the meaning of uncorrected? Meaning of uncorrected. Gyro is 0. Again? No. Uncorrected means
in the modern gyro compasses, latitude error can be corrected. You can feed in the value of latitude where you are sailing, either manually or from the GPS. तो gyro compass उसी रेशियो से, उसी लैटिट्यूड से एरर कैलकुलेट खुद करता है और अपना करेक्शन कर लेता है. दैट मीन्स मैनुअली यू डोंट हैव टू करेक्ट लैटिट्यूड एरर. द gyro which is showing you correct which is after the correction. तो modern gyro compasses में either we have a GPS connection from where it is reading, getting the latitudes, or you have to manually enter the latitude by pressing few buttons. So in this case 60 south is the MLAT, तो आप उसमें 60 डिग्री का लैटिट्यूड डाल सकते हैं. हालांकि वो ये तो पूरा एक ड्यूरेशन का रिजल्ट है कि 4 degrees of latitude you are changing. But when you are sailing at a given latitude, you must feed that value in the gyro compass and it will make its own correction. You don't have to manually calculate and apply. But that's in modern gyro compasses. Here we are doing academic exercise of numericals. So it is clearly saying it is uncorrected. So who will do the correction? Manually, you will do the correction. It is also possible that there is a speed input to the gyro, force also coming from there. So there can be steaming error correction also automatic. You don't need to manually do it. जो हम यहाँ पे सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं प्लस माइनस ईस्टर्ली वेस्टर्ली कर रहे हैं, that may happen automatically within the gyro compass if it is corrected, if the feature is there. In this case it is uncorrected. That means we have to calculate and we have to apply the error. Course is given 240 degrees, true and gyro. That means the ship by gyro also doing the same thing and true heading is also 240. Mean latitude is 60 degrees. Here, this particular information, 240 true and gyro, has got a relevance. Can somebody identify what is that relevance? That the gyro is same as the true no error, heading. sir. No error. Sir, Come again? Vessel will be doing north south only, na? Negative. It is to say already it is at some latitude here. That means damping error will be there. Yes, sir. And steaming error has to be equal and opposite. Both are cancelling out. अगर 2 Yes, sir. डिग्री ईस्ट तो 2 डिग्री वेस्ट दोनों कैंसिल आउट हो गए तो gyro is going to read the same. Yes, sir. SC minus D is equal to 0 रहेगा basically. Yes, exactly. So it is to imply that DE is equal to SE and equal and opposite. So that's a valuable information in this particular case. And that's the basis of all your calculations, that you must match that DE should be equal to SE and opposite in sign. एक easterly है तो westerly होगा दूसरा. Since we are in southern hemisphere, DE is going to be Westerly. what? Westerly. Since the Westerly. course is 240, is it southerly course? Yes, sir. Yes, sir. Southwest. That means SE will be Easterly. Easterly. very good.
सो एक वेस्टर्ली है, दूसरा ईस्टर्ली है, ये तो एस्टैब्लिश हो गया। अब वैल्यू की बात रह गई। ऑपोजिट साइन तो हो गया, यहीं से देख के नजर आ रहा है। सो तो वो ऐसे ही तो एजिमुथ के इक्वल हो जाएगा ना फिर। हाँ एग्जैक्टली होगा, वहीं से हम ऐसी पिकअप कर लेंगे वैल्यू। so एक we चीज can use कैलकुलेट that करेंगे तो formula v cos cos upon 5 pi cos lat। उसको क्यों चाहिए? आपके पास कोर्स दिया हुआ है कि नहीं? इसमें दे रखा सर। 240 स्पीड दिया हुआ है कि नहीं? जी सर। लैटिट्यूड दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। तो तीनों चीज है, तो v cos कोर्स बाय 900 cos lat वाला फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं? यस। तो विल अप्लाई दैट फॉर्मूला। बॉक्स में the valuable information that we talked about, true and gyro course being same implies that DE is equal to SE, equal and opposite in sign. DE is westerly, SE is easterly. So we calculate DE. (2.48 degrees west). Please do the calculation. Yes sir, 2.48 west. Very good. So naturally, SE is going to be 2.48 again, but it has to be easterly because this is westerly, it has to be easterly. तो यहां तक कंप्लीट कर लीजिए अपना कैलकुलेशंस करते हुए। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द स्क्रीन आल्सो इफ एट ऑल। Tell me when you are done with this screen. Can we go next? Yes, sir. Yes, sir. So that implies DE has to be 2.48 but westerly, sorry, easterly. क्योंकि हमने DE का कैलकुलेट कर लिया, उसी की वैल्यू होनी है SE की, so that has to be opposite sign equal. So now we calculate the speed of the ship, not given, so we apply the same formula. Do you see that the value is negative? That means it is going to be easterly.
Also at the bottom, in the denominator part, you are seeing minus because the course is westerly. 240 is westerly course. Do your own calculations. It will give you practice also. Don't just note down from the screen. It is there for you to refer, yes, but do your own calculations. सर ये ऐसी सेम कैसे किया था सर 2.48 डिग्री डीए के कैसे किया था? For that we go back to the screen. Okay. Do we see here in the question that it is 240 degrees true and gyro? हाँ जी The gyro is reading 240. The ship is also doing true 240 degrees. Correct? करेक्ट सर तो ऐसा क्यों होगा? जहाज 240 डिग्री पे चल रही है, जो ईस्टर्ली एरर होगा दैट हैज टू बी बैलेंस्ड बाय वेस्टर्ली एरर. यस सर अगर दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हुए तो जहाज उसी पे चलेगा या नहीं? यस सर उसी पे चलें Since we are in southern latitude, the DE is going to be westerly. Is that correct? करेक्ट सर Why correct? Because the settling curve is like this. So south में the DE is going to be westerly, correct? यस सर करेक्ट And the ship is doing a course which is southerly course, 240. यस सर तो अगर हम देखें वो 900 cos lat वाले की 240 का कोर्स कर रहा है, तो resultant is going to be this, correct? The orange line. यस सर That means the gyro compass will settle down perpendicular to this. यस सर राइट That means the gyro has shifted easterly. यस सर ईस्टर्ली So SE is going to be easterly. यस सर DE is ईस्टर्ली going यस to be westerly. तो opposite sign हो गया ना? हाँ जी सर और चूंकि true and gyro is same, that means both have to be equal. Opposite तो हो ही गए, देख रहे हैं हम. हाँ जी सर तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, तभी तो कैंसिल आउट करेंगे. और ट्रू एंड जेरो बोथ विल बी रीडिंग सेम. अगर कोई भी एक बड़ी छोटी वैल्यू होती तो कुछ नेट रिजल्टेंट आ जाता. सही बात है ठीक है तो आर वी गुड कि बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट? यस सर ओके, तो वी गो फॉरवर्ड अगेन. हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी 2.48 DE. तो अभी जो हमने एनालॉजी देखी 2.48 डिग्री DE आ गया, तो एसी भी उतना ही होना चाहिए. यस सर ऐसे ही उतना ही ऑपोजिट वेस्ट ईस्टर्ली आ जाएगा एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में 2.48 लगा दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके. DE से it is 2.48 westerly. This time it is going to be easterly. यस सर सर 902 क्यों लिया सर 900 की जगह
ओके 902 क्यों लिया? अर्थ को एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। ओके तो 360 in 24 hours per hour how much? 15 डिग्री। Converted into miles how much? 900। 900। तो 900 वाली तो बात समझ में आती है। हाँ जी सर। 902 क्यों लिया? क्योंकि अर्थ का रोटेशन is not 24 hours but 23 hours 56 minutes 4.09 सेकेंड। तो कम टाइम है ना। सिडिरियल डे कितने देर का होता है? हाँ जी सर, जो आपने लिखा वही। तो इट इज टर्निंग एट ए फास्टर रेट ना। नहीं समझ में आया? 360 degrees in 23 hour 56 minutes 4.09 seconds. That means it is not 900 but 900 से जल्दी हो रहा है ना, कम टाइम में ज्यादा घूम रहा है। All right, convert this 23 hours 56 minutes 4 seconds इसको hours में convert कीजिए, कितना घंटा हुआ? 56 minutes 4 seconds. How many hours? हाँ जी, आवाज नहीं आई, डिस्टर्बेंस आया कुछ। 56 मिनट 4 सेकंड का 0.94 आएगा। 0.94 हाँ जी। 23.94। माइक्रोफोन म्यूट कर दो। ओके 360 डिग्रीज को 23.94 आवर्स से डिवाइड कीजिए। व्हाट इज द पर आवर रेट ऑफ टर्निंग? डिस्टर्बेंस आ रहा है, लॉग इन कर लो, एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लो आप। बट जस्ट टू से 360 degrees being done in 23.94 hours. So is it more than 15 degrees? हाँ जी सर, मोर है सर। Multiplied by 60, convert it into 60 miles. हाँ जी सर, 902 आ गया। तो हो गया ना। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन ये 900 और 902 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्थ का पेरिफेरल मोशन इज 900 समथिंग। 900 लीजिए, 900 लीजिए, 902, उसमें शिप का कंपोनेंट जो होगा वो बहुत छोटा सा होगा, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हम देखते हैं 1-2 डिग्री का फर्क पड़ रहा है। 900 coslat is a big vector as compared to ship's vector, which is 10 miles or 10 knots, 12 knots, 15 knots, 20 knots. So we can take either 900 or 902, equally good. 0.000 में फर्क आएगा, जिसको हम रीड भी नहीं कर सकते जायरो कंपास। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू सर, क्लियर। Okay. So we calculate the speed because in this formula v is unknown, but other things we already have. So it is all basically mathematical exercise to find out v.
Tell me what is the speed that you are coming with. Answer. 36 decimal 36.285. So 36. Okay, so let's see what is there. 36.33 knots is the answer, part 1. You are right. So first part, calculate the speed of the ship. We have already got the answer, 36.33. Looks like this is डिफेंस सर्विसेज का जहाज है जो बहुत तेज चलता है. The second part of the question is asking to find out course to steer on gyro on reverse passage from B to A. That means from 58 to 60 south. Since the course is going to be reciprocal, so 100 minus 180 degree minus कर देंगे. So true course in this case is going to be 60 degrees, 060 actually. DE still remains same because the ship is sailing between the same latitudes. However, since the course has changed, the steaming error will become different. Course is 060, that means the course is northerly, 060 degrees kar raha hai, that means the resultant is like this and the error will be Westerly. Westerly. very good, westerly. So this time DE also westerly 2.48 and AC also westerly, which we are going to calculate now that we have the speed of the ship. So both westerly both will get added up and the gyro will be reading higher than the true. True is 060 degree. So the gyro has to be reading more than this. So इसी formula को apply करेंगे. This time, as we said, we have to calculate AC. We have the value of V. We have the cos course, that is 60 degrees. We have the latitude MLAT 060, 60 degree south, and we have these values also. So all values available. So if we combine them together, 2.161 west. 064.63 degrees is the gyro course. 060 is the true
2.4 is westerly DE and 2.15 is westerly SE. Yes, sir, same one. Very good. So this is the answer to part 2 of the question. Are we comfortable now? Yes, sir. Good. Next question. Okay, anyone missing here? Please complete it. तब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. सर क्वेश्चन कॉपी करना है थोड़ा सा. हाँ करेंगे. ये वाला बाकी सब लोगों को मे बी लैगिंग बिहाइंड, उनको कंप्लीट कर लेने चाहिए. अभी करते हैं. सर ये जो स्पीड आई है 36.34, सर कभी कभी ऐसे डाउट नहीं हो सकते गलत तो नहीं है, क्योंकि इतनी स्पीड शिप की आएगी तो. अगर आप कैलकुलेशन पे भरोसा कर रहे हैं अपना, तो जो आंसर आ रहा है वो तो आएगा ही. अभी मैंने कैलकुलेट किया था तो मुझको 36.33 आया. आपने कैलकुलेट किया विद गिवन फैक्ट्स तो आपका भी 36.33 आया. पूरे क्लास को 36.33 आया. तो अब हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं ना भाई हमारा कैलकुलेशन सही है, सबके वही आंसर आ रहे हैं, हमने गलती नहीं करी. तो नंबर्स विल नॉट गो रॉन्ग ना. नहीं सर वो तो ठीक है सर, 36.33 आया था आंसर, बट वही था कि शिप्स की स्पीड इतनी 36 नॉट्स, फिर वो डाउट सा चले जाता ना क्वेश्चन दिमाग में. तो मैंने एक इनपुट दिया था ना कि लगता है कि ये जहाज डिफेंस मर्चेंट नेवी का नहीं, इंडियन नेवी का है. फ्रिगेट है, बड़ी तेजी से चल रहा है, हाई पावर्ड न्यूक्लियर पावर वाली इंजन लगा रखी है उन्होंने. सही है ना. वही सोच सकते सर फिर तो. एग्जैक्टली. तो ज्यादा डाउट में नहीं आने का. अगर डाउट है तो अपने कैलकुलेशंस को रीवेरीफाई कर लीजिए. नो दैट यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक देयर. कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो. डाउट आ सकता है कि 36 तो नहीं होना चाहिए, तो अगर वो है तो एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए. इफ यू आर वेरीफाइड देन यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि मेरा कैलकुलेशन सही है, जो स्पीड आई है सो आई. So, next question. This will require a small new concept. Please tell me when you're finished.
Yes, sir. Okay. So we already have a DE given, which is 3 degrees in a given latitude north, and it is asking 45 degrees south. The idea is that it does not matter whether north or south, equal DE will be there, 45 degrees south या 45 डिग्री नॉर्थ, tan 45 डिग्रीज का वैल्यू तो वही आएगा। नॉर्थ और साउथ से फर्क ये पड़ता है कि एरर इज गोइंग टू बी ईस्टर्ली और वेस्टर्ली। सो it does not matter what we are, whether it is south or not, amount में और in magnitude of error will directly be a function of latitude, or rather tan of the latitude. तो जिस रेशियो में tan of the latitude is changing, the DE will also be changing in the same ratio. That means if we have DE in a given latitude, A tan lat, in a given latitude, उसी रेशियो से चेंज होगा किसी और लैटिट्यूड के लिए, which will be function of this tan of latitude. So we can calculate the damping error by the ratio of the tan of the latitude. What we are meaning to say, that we want to find out DE in a second position in a given latitude, while there is DE already given for first latitude. तो इनको अगर साइन से भी हम इक्वेट करें, sin DE2 by sin DE1, this will be equal to K tan lat 2 by K tan lat 1. The value K is getting cancelled out. Sin co is getting cancelled out. So what is leaving you here with DE2 by DE1 is equal to tan lat 2 by tan lat 1. So this is another formula for finding out DE if it is already given at one latitude. DE2 की वैल्यू पता नहीं है आपको, DE1 की वैल्यू दी हुई है गिवन लैटिट्यूड पे, और लैटिट्यूड 2 दे दिया आपको कि इस लैटिट्यूड पे DE क्या होगा। So we can have a simple formula, DE2 by DE1 is equal to tan lat 2 by tan lat 1. In questions you will always be having this and this and this, तीन वैल्यू होगी तो चौथी निकल जाएगी। And that is what the question is asking. So I have given this self practice because the first part is explained now. The first part is already explained how to do it. The second part says find out the direction of the axle. ये axle क्या चीज हो गया? जहाज का कौन सा axle? Propeller shaft. Sir, axis of the gyro, sir. Yes, exactly. Axle मतलब axis जिसके अराउंड घूमता है।
The direction of the axle means the spin axis, where is it heading, where you already are given the latitude